आम कंपानी सहित गोटे भर्चुआल नॉलेज विलेज सेंटर आम कंपानी सह इनॉग्रेशन है आम अंचल लोक मैंने घरे बसिकी चाष कम जो जो समस्या होची तार सहयोग से घर बस करें आम कंपानी माध्यम आम कृषि विज्ञान केन्द्र साहाय्य आम लोक मानू साहाय्य करूँ घर बसिकी से कौन रोग पोक लगी से जिन दूर करेंगे आम कंपानी माध्यम होची तेणु आम मैंने खुशी अच्छु आमर सुदूर नॉर्वे रु टीम आमर गोटे रेजिलियंस प्रोजेक्ट अपस्केल प्रोजेक्ट अच्छी से टीम जो डायरेक्टर अन्य वैज्ञानिक माने आसी मुख्य आकर्षण थिला आपण माने जो आम ये उपस्थित अच्छे आमर ये जो बेरुनिया गाँव अच्छी से आम गोटे वर्चुअल विलेज नॉलेज सेंटर कराला जो कि चुक्तिनामा स्वाक्षरित है आमर कृषि विज्ञान केन्द्र जी सहायता दौची एवं स्वामीनाथन फाउंडेशन रिसर्च जे टेक्निकल सपोर्ट देवे एवं आमर जो बलदेव जी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी अच्छे चुक्तिनामा स्वाक्षरित है जो थी कि केमिति आमे डिजिटल स्मार्टफोन को धरिकी ताकू यूज करिकी केमती आमे घरे बसिकी आम समस्यार समाधान करवा आमर विभिन्न प्रकार कृषि आनुषंगिक कृषि जो प्रकार असुविधा होची रोग पोक लगिला कोर्स से भेराइटी विषय फर्टिलाइजर मिलला कि नहीं ताठू सबुठू बड़ होची हमको बाजार दर विषय में हमको सूचना मिलूनी से सबू जिनस आम केमती फोन रे बसिकी भर्चुआली जापर से गोटे नॉलेज सेंटर गोटे सेंटर सृष्टि कराला जो थी कि ये आपण गाँव आखपाख गाँव लोक मैंने तार सुविधा सुजोग नहीं पारे जो नॉर्वे टीम आसी से माने आमर ये जो फार्मर प्रोड्यूसर बलदेव जी अच्छा जो एक्टिविटीज अच्छी जो थी से 3 वर्ष भितर एते उच्च को सफलतार सोपान रे पहुँची बहुत प्रशंसा कले से जगह ये जो बलदेव जी फाउंडेशन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो मेंबर्स माने से माने विशेष भाव में धन्यवाद देते आम कृषि विज्ञान केन्द्र जो ढेंकानाल अच्छे तार वैज्ञानिक मानक जी सबु समय आसिक सहायता दौरान ता सहित ओडिशा सरकार विभिन्न योजना माध्यम सरकार सहायता पाँच जो विषय कि से धन्यवाद देते ये भाव में जो इंटरैक्शन प्रोग्राम टी होता सुरखुर संपादित है। My name is Dr. Raj Kumar from MS Swaminathan Research Foundation. In Assam and Odisha, we are implementing the project called Resilience Upscale, supported by the Norwegian Embassy. Here in Odisha, the partners are OUAT, Odisha University of Agriculture and Technology, MS Swaminathan Research Foundation, Central Rice Research Institute, Cuttack, and NIBIO. These are the partners in this project. The main objectives of this project is sustainable production, increase the farm income, and food and nutrition security. For that purpose, so we are to overcome the challenge of the climate change, mainly the small holding farmers. We are conducting various capacity building programs to the farmers. So mainly today, we have inaugurated a virtual village knowledge center, because nowadays information communication technology plays the major role for the two-way communication to provide the capacity building and knowledge management. In that way, with the support of this Baldevji Farmers Producers Women Company, supported by the GT Bharat, and with the support of the all Farmer Producers Company women members, and mainly the KVK. So today we have started the Virtual Village Knowledge Center. So the purpose of the Virtual Village Knowledge Center, we are providing training and capacity building to use the various digital tools. For example, we have the helpline services. So what is happening at present, suppose if a farmer go to the field, observe some abnormality in the plant, so immediately they are going to the agro input dealer. So it is not sufficient. If the agro input dealer would be able to provide the solution for all the plant problems, then there is the agriculture department, there is a KVK scientist, many people are working that. So it should be help to the farmers. Whenever they have the problem, they can immediately call that number, the helpline number. The farmer will be connected with the expert, so they can interact through the conference call.
In that way, they can receive the real-time information to overcome the challenges. Not only the helpline services, we have helpline services, voice SMS, phone-in program, audio conference, video conference, Plantix app, Plan Clinic, and also the digital Plan Clinic. These are the important ICT tools. For using that one, farmers need not go anywhere. They can get the information and knowledge and content from their field, where they are sitting. So in that way, we are trying to build the capacity of the farmers using the ICT tools and also other technology, the capacity building. For example, we are talking about the DSR, and also there's nitrogen management and AWU, alternative wetting tracking. These are the important climate resilience technology. So thing is, we have to build the capacity of the farmers to use the technology regularly to overcome the challenges of climate change. Thank you. जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।